There is some problem with the camera today that I'm facing. Just hold on. Okay, let's start the session. So, very good evening. Today we are going to start with solving the standard costing sums first. So, quickly we'll revise what are the three types of variances that we have in standard costing. The first is our material variance, which evaluates the difference between standard material cost, actual material cost. It helps you to identify the inefficiencies or the cost changes in the material procurement usage. So when you talk about material variance, the first formula that we have over here is for material price variance, that is MPV. The formula that we have is standard price minus actual price into 100, into actual quantity. So standard price minus actual price into actual quantity, when you do, you get material price variance. The next formula that we have is for material quantity variance. Now, what is the formula for material quantity variance or material usage variance, which you also called it as? It is standard quantity SQ minus actual quantity into standard price. Okay, so remember the formulas very properly. Okay, so first formula is material price variance. Yes, we are going to start that as well. Let us first solve the sum. Material price variance, where the formula is standard price minus actual price into actual quantity. And we are also going to start with material usage variance, that is standard quantity minus actual price, standard quantity minus actual quantity into standard price. Next, we had labor variance. In labor variance, we have two types, labor rate variance and labor efficiency variance. So the formula for labor rate variance is labor rate variance is equal to standard rate minus actual rate into actual hours worked. Actual hours worked. Okay. The next formula that we have is for labor efficiency variance. The formula that we have for labor efficiency variance is standard hours minus actual hours into standard rate. Okay. So again, I am saying, remember the formula so that the sum solving becomes easier for you. Okay. Students, I know this was done. I am revising the formulas. Had we solved the sum, हमने sum solve किए थे क्या? बताइए आप लोग. Sum solve किए थे आप लोग ने? So that's what I am saying कि we are solving the sum. In the starting only I said that we are going to solve the sum. आप लोग को नहीं याद होगा
कि formula क्या है. So I am just taking a recap of formula so that we can solve the sum easily. So don't post that this is done, this is done. I know this is done. On Monday, on 25th November, it was done. Okay. But we are solving the sums. Why? Because if sum comes in the exam, what are you going to do then? Okay, so these are the two formulas that we have. One minute, I'm just trying to relocate what is the issue with my camera. Just give me 2-3 minutes. Am I visible now? Is it visible to everybody? Yes. Okay, fine. Whatever queries you have, please post it in the chat box. Don't raise your hand again and again. So now we are going to solve the sum of material and the labor variances. Okay, just a minute. I just shared the sum with you all. So this is the sum that we are going to solve, students. The first sum that we are going to solve is for the material variance. This is how you will get the question. From the following particulars, calculate material cost variance, material price variance, and material usage variance. Standard material is given to you, actual material is given to you, standard price is given to you, actual price is given to you. Now we are going to start solving it. So firstly, we'll write down all the formulas so that our solving becomes easier. So the first formula that we are going to write it is material cost variance. So when you calculate material cost variance, remember this formula, okay? So this is an addition to your formulas. Standard material cost minus actual material cost. So what is the formula for material cost variance? Standard material cost minus actual material cost. Now, what is the standard material that you have in the sum? Everybody? Yes? Very good, Gauri. It's 500. So, we have standard material cost has 500. And what is the rate of that material? 6 rupees. So it will be 500 into 6. That will be your actual material, because this is 500 is what? It's kg. It means for 1 kg. So we need to calculate for overall. So it is 500 into 6. Okay. Same we are going to do for actual. That is 450 into 8. So what is the amount that you are getting? 500 into 6 when you do, you get 3000 rupees, minus 450 into 8 when you do, you get 3600. So the answers that you get by minusing 3000 and 3600, you get minus 600. So you remember when we started the standard costing, we talked about favorable, unfavorable. Favorable means it is positive, and unfavorable, which is nothing but adverse, which is negative. So here, since we are getting the answer in negative,
we are going to write, we are not going to put the sign of minus, we are going to write a. a का मतलब होता है adverse, that is unfavorable. तो अगर ये पॉजिटिव में होगा तो हम ब्रैकेट में f लिखेंगे, अगर नेगेटिव में आंसर आया तो हम a लिखेंगे कैपिटल में. ठीक है, क्लियर विद द फर्स्ट सम एवरीबडी? यस, f इज फॉर फेवरेबल. ओके, मैं ये एडवर्स हटा रही हूँ यहाँ से अभी. ठीक है, नाउ सेकेंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट. तो हमने कर लिया. अब सेकेंड हम जो कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस. प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस into actual quantity. Okay, so standard price क्या है? What is the standard price students? Standard price कितनी है? प्राइस ये कॉस्ट नहीं पूछा मैंने आप लोग को. दिस इज कॉस्ट, यहाँ पे पढ़िए कॉस्ट. आई एम आस्किंग प्राइस. वेरी गुड, इट इज 6. सुपर. सो स्टैंडर्ड प्राइस इज हाउ मच? 6 रुपीज. और एक्चुअल कितना है? 8 रुपीज. तो 6 माइनस 8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी. क्वांटिटी इज नथिंग बट द मटेरियल ओनली. तो कितना एक्चुअल क्वांटिटी है? दैट इज 450. सो इट इज 450 kg. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू गेट ओवर हियर? एक मिनट. Okay, so the answer that we are going to get is -2 into 450. So -2 into 450 kg. So आपको आंसर कितना आ रहा है? -900. बट आप लास्ट में माइनस लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे. यू विल राइट sorry 900 and in the bracket you will write a for adverse, that is minus. Clear everybody? Yes, A for adverse. Now third one, material usage variance. Okay, now material usage variance का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी into standard price. Okay, now tell me what is the standard quantity and actual quantity. कितना है standard quantity, actual quantity? बताइए आप लोग. Very good, very good, superb. Standard quantity is 500, actual is 450. Superb. So it is 500 minus 450 in the bracket and then multiply by standard price जो कि है आपका 6 rupees into 6. So the answer comes out to 50 into 6 which is nothing but 300. अब ये पॉजिटिव में आया है तो आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में? F की A. Very good, it is F. Super. So I think everybody understood how to solve it. Easy. So this is how students we solve our material variances sum. ऐसे ही आएंगे. अब लास्ट में ना हमें एक चीज और करनी होती है, दैट इज वेरिफिकेशन. इसका भी 1 मार्क्स होता है. ओके, वेरी सिंपल. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को इन दोनों से आप टैली करोगे. सो दैट इज MCV इज इक्वल टू MPV प्लस
MUV। अब आप देखिए क्या इसका मतलब अब जो हम करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम वो ही कर रहे हैं। तो MCV कितना है हमारा? 600, जो कि नेगेटिव में है। करेक्ट। अब MPV कितना है? 900, जो कि नेगेटिव में है। और MUV हमारा है 300, जो कि पॉजिटिव में है। तो हमें एक्चुअल आंसर कितना चाहिए था? 600A, मतलब -600। तो इसको अगर हम हमारे नॉर्मल टर्म्स में कन्वर्ट करें, सो दैट इज -900 + 300, विच इज नथिंग बट -600 ओनली। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है? Yes, it is coming same. That means our calculation for material price variance is correct and it is verified. Clear? Easy, everybody? Everybody can solve the sum अगर एग्जाम में आए तो ऐसे कुछ? Okay, great. Now you can take a pic of it quickly so that we can move to the next one. एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देती हूँ so that you can get it at one page. ठीक है, ये लीजिए. Please solve, take a pic of it quickly. This is our answer. This is our answer. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स है और राइट हैंड साइड के टोटल करोगे उतना ही होना चाहिए। सो आप इसको कैलकुलेशन करिए सुषमा। -900 + 300 कितना हुआ? इट इज -600। सो हम माइनस तो नहीं लिखते, हम एडवर्स को ए लिखते हैं। सो इट इज 600A। तो आपके राइट में भी वही आंसर आ रहा है और लेफ्ट में ऑलरेडी 600A है। So that means your left hand side and right hand side are getting tallied. Clear? Formula for verification is this only: cost is equal to price plus usage. Fine? Great. Now moving on to the next one, जिसमें हम लेबर वेरिएंस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मटेरियल का किया वैसे हम लेबर का करने वाले हैं। सो कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। All the three variants we will calculate here also. First is labor cost variance is equal to standard labor cost minus actual labor cost. स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितना होगा? जैसे प्राइस का किया था वैसे ही करिएगा। अब आपको एक चीज डिफरेंस बताती हूँ, लेबर में कभी मटेरियल नहीं होता ना प्राइस होता है। लेबर के लिए नंबर ऑफ आवर्स होगा और प्राइस के जगह पे रेट होगा, बिकॉज लेबर्स को आप प्राइस में नहीं माप सकते। इट वुड बी पर आवर रेट दैट यू पे देम द वेजेस। करेक्ट? तो यहाँ पे ओनली टर्मिनोलॉजीज डिफर हो जाती है, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। फाइन। So standard labor cost is equal to 720 into 1.50 minus actual labor cost is 800 into 1.40. So what is the answer that we are getting? It is 1080 minus 1120. अगेन आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है, that is somewhere around 40. So we will put it in the bracket and we'll write A, that is adverse. Okay? Clear, everyone? Yes, no? Okay, great. अब हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड कर लिया। अब लेबर में प्राइस तो नहीं होता ना,
तो लेबर में रेट होता है। तो जो हमने किया था फॉर्मूलाज में, लेबर रेट वेरिएंस, द फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड लेबर आवर माइनस एक्चुअल labor hour in the bracket into 1 minute. Huh? Okay, we are solving rate. So sorry. 1 minute. Not hour. It will come your rate. Standard labor rate minus actual labor rate into actual labor hour. ओके, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लेबर रेट कितना है हमारे सम में? 1.50। एक्चुअल कितना है? 1.40 इंटू एक्चुअल लेबर आवर कितना है? 800 hours. So into 800. So what is the answer that you are getting? 0.10 into 800. That comes out to 80. And ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा? F. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक मेरे सॉल्व करने के पहले सबने सॉल्व कर दिया। सुपर, ग्रेट। नेक्स्ट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। The formula is standard labor hour minus actual labor hour into standard labor rate. One minute. ओके, तो मुझे बताइए स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना है? 720. एक्चुअल लेबर आवर इज 800 into स्टैंडर्ड लेबर रेट इज हाउ मच? 1.50. तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट कम्स अराउंड 80 इंटू 80 भी माइनस में आएगा बिकॉज स्मॉल नंबर को आप बिग नंबर से माइनस कर रहे हो, इंटू 1.50. सो ये आंसर दैट वी गेट इज इन नेगेटिव. सो नेगेटिव है तो हम इसको किस में लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? एडवर्स. सो इट वुड बी 120A. ओके, अब हमें क्या करना है? लास्ट में वेरिफिकेशन करना है, राइट? अब वेरिफिकेशन करेंगे, चलिए करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर राइट आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का। LCV, that is labor cost variance, is equal to LRV, labor rate variance, plus labor efficiency variance. लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा था -40, लेबर रेट वेरिएंस है हमारा 80 इन पॉजिटिव, प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है -120, दैट इज एडवर्स। तो ये कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको मैं सिंपल मैथ्स लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इज -40 इज इक्वल टू 80 प्लस -120। ठीक है, मैंने एफ और ए को निकाल दिया जिसको नहीं समझ आ रहा था। अब यहाँ पे तो -40 ही रहेगा,
अब यहाँ का मैं सॉल्व करूंगी. सो प्लस माइनस इज हाउ मच? माइनस. सो 80 minus 120 comes out to how much? 40 only. So it will be minus 40. तो ये देखो दोनों सेम आया ना. So that is left hand side is equal to right hand side. अभी सबको समझ आया? Everybody understood it properly? The verification part also? Okay, just a minute. Take a pic of this as well. इसका भी पिक ले लीजिए. Okay, fine. So understood how are we going to solve material labor variances? Easy? नो नो नो, ये मैथ्स कैलकुलेशन जो मैंने नीचे दिखाई थी ना आपको, वो जरूरत नहीं है. वो आपको समझने के लिए था, बिकॉज किसी किसी को नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने इसलिए वो थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करके दिखाया. आपको यहाँ तक ही करना है बस. ये यहाँ पे लास्ट. ठीक है. सो लेट्स मूव बैक टू अ स्लाइड. Okay, I'll write it. Fine. Quickly take it. Minus 40 is equal to 80 plus minus 120. जिसको रेफरेंस के लिए चाहिए लिख लीजिए, बट डोंट राइट दिस इन दी एग्जाम. ये आपको जरूरत नहीं है लिखने की. आपको सिर्फ लास्ट में जो येलो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है उधर तक ही लिखना है. टू माइनस 40. ठीक है. डोंट राइट अगेन. आई एम सेइंग ये आपको नहीं लिखना है. इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. Okay, fine. So let's move back to a slide. One minute. Okay. So we solved this first question. Then we solve this labor gains. Okay. Now we'll start with some topics revision, and the remaining we'll do it in the next session. Firstly, we are going to discuss about what is management accounting. Now, management accounting, student, is what? It consists of two separate words, management and accounting. It is nothing but the managerial study of accounting that we do. ये जो है मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजीली हो सके, इसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं. So here the emphasis of management accounting is to redesign the accounting in such a manner that it is helpful in framing the policies, the control of the execution of the plans. Now the definition of management accounting is given by ICMA, that is Institute of Chartered Management Accountant. What is the definition? It states management accounting is a presentation of accounting information in such a way as to assist management in the creation of policy and in the day-to-day operations of the undertaking. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपको ये फायदा होता है कि सबसे पहले तो आप उसको रिकॉर्ड्स अच्छे से बनाओगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लोगे कंपनी के ऑपरेशंस का, दैट इज डे टू डे एक्टिविटीज का. ठीक है. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स of management accounting? The first objective is planning. Obviously, management accounting helps students management in formulating, implementing the plans for the future by providing relevant financial information. Management accounting enables the management
to set the realistic goals, forecast future cash flow, estimate what is the financial resources that is needed to achieve those goals. Then comes your decision making. Management accounting provides financial information to the management that enables them to make informed decisions. It provides information about cost, revenues, profitability of different products, services, activities, so that management can identify the opportunities, make decisions that maximize profit, minimize the cost. Then comes control. Management accounting provides a system of control students that ensures the actual performance is consistent with the planned performance. आप यहाँ पे क्या करोगे? एक बजट बनाओगे, कंपेयर करोगे आपके एक्चुअल रिजल्ट्स को जिसके साथ आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सके अगर कोई वेरिएंस है। अगर वेरिएंस आइडेंटिफाई होता है तो फिर आप उसको करेक्टिव एक्शंस के साथ लेके इम्प्रूव करोगे सो दैट द परफॉर्मेंस कम्स ऑन ट्रैक। Then come performance evaluation. Yes, obviously, management accounting provides information on the performance of different units, right? That is your departments, your individuals within the organization. So this helps the management to take effective, efficiency decision about the individuals, take actions to improve those. And then last is communication. Management accounting provides a means of communicating the financial information to management, other stakeholders within the organization, student. It provides reports, analysis, other financial information that enables the management to understand the financial position also, performance also of the organization, and then they can take proper decision. Okay. Next is accounting plan. अब अकाउंटिंग प्लान क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ चार्ट ऑफ अकाउंट जिसमें हम हमारे ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ताकि हम प्रॉपरली ट्रैक एंड रिपोर्ट कर सके हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को। It includes list of account, each of which represents your revenues, your expenses, your liabilities, your equities. Okay? So अगर आपके पास एक effective accounting plan है, it will enable the business to identify, to classify the transactions responsibility in proper order. It helps business students to track the financial performance of each responsibility center, hold each center accountable for their results. Okay? Any doubts till here? Yes, no? Okay. Next, we are going to talk about कि responsibility center क्या होता है. Responsibility center, the name आपसे नेम से ही पता चलेगा. Responsibility मतलब किसी को वो particular काम देना and काम देने के बाद that person is accountable. So it is a part of company where the manager has authority, responsibility कि आपने वो पर्टिकुलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज को अचीव करना है. यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस. So responsibility center is a functional entity, students, within a business
that tends to have its own goals, objective, procedures to identify कि revenues क्या हुए, expenses क्या हैं, कितने funds incur हुए, कितना funds invest किया. Okay. The definition of responsibility center is given by the expert Robert Anthony. What does he state? Responsibility accounting is that type of account management accounting which collect and report both plan and actual accounting information in terms of responsibility centers. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल कितना प्लान्ड एक्सपेंसेस या इनकम था, आपने कितना स्टैंडर्ड के हिसाब से अचीव किया, सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन प्रॉपरली. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. अब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं बिजनेस में. फर्स्ट इज योर कॉस्ट सेंटर. ऑब्वियसली कॉस्ट सेंटर क्या देखेगा, किस तरह से हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है. सो इट इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस जहां पे हम रेवेन्यू नहीं जनरेट करते बट हम कॉस्ट को कंसिडर करते हैं. जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, आईटी टीम हो गया. वहां पे आप रेवेन्यू नहीं बना रहे हो बट आप कॉस्ट कैसे कंट्रोल करोगे वो ध्यान रखोगे. Second is revenue center, which is responsible for generating the revenues. It includes your sales team, marketing teams, जिनके प्रमोशन से आपको customers मिलेंगे. Then comes the profit center. Profit center is responsible for what student? Revenue भी generate करना, cost को भी control रखना ताकि वो profit बना सके. कॉस्ट ज्यादा हुआ, रेवेन्यू कम हुआ तो लॉस हो जाएगा, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा. देन कम्स द इन्वेस्टमेंट सेंटर. सिर्फ इनकम अर्न कर करके क्या करोगे, कंपनी का ग्रोथ भी तो करना है ना. तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी. So here these centers are responsible for generating revenue, controlling cost and also making investment decision. कौन से प्रोजेक्ट और रिसोर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिले. सो दैट इन्वेस्टमेंट सेंटर विल टेक केयर ऑफ. ओके, क्लियर? क्लियर क्लियर. Okay. Next is break even point. Now what is break even point? Break even point is a situation, simple में याद रखो, no profit no loss. एक ऐसा situation where the company's cost and revenues are equal. Okay, that is no profit, no loss. The formula that we have for break-even point is sales minus variable cost is equal to contribution minus fixed cost. Or when you want to find out break-even point in units, we use the formula as fixed cost divided by contribution per unit, or when you want to find out in rupees, that is in sales value, the formula is fixed cost divided by PV ratio. Then comes your make or buy decision. Now, when you talk about make or buy decision, क्या समझ आता है आपको कि हमें वो प्रोडक्ट को खुद कंपनी में बनाना चाहिए या बाहर किसी सप्लायर से खरीदना चाहिए, ये डिसीजन लेना. तो जब कंपनी ये चीज सोचेगी तो ऑब्वियसली वो अपना कॉस्ट देखेगी कि मुझे कंपनी के अंदर बनाने वाले प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा हो रहा है कि बाहर से खरीद के देने में मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है और मेरा टाइम भी बच रहा है. सो दैट 1 minute. So that decision which the company takes whether to produce the product in-house or buy it from external supplier is your make or buy decision. Here we determine what is the most cost-effective solution, students. Okay? Clear? Any doubts? Yes, no?
Syllabus is completed, dear. We are doing the revision now. Bhumi. Okay. Then comes your product mix decision. देखो नेम में ही आंसर है, प्रोडक्ट मिक्स, कॉम्बिनेशन करना दो तीन प्रोडक्ट्स का ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए. वी ऑल नो मैकडोनल्ड्स, हमें वहां पे अलग अलग आइटम्स भी मिलते हैं, बर्गर्स अलग मिलेगा, फ्राइज अलग मिलेगा, बट लोग अट्रैक्ट किसके पास होते हैं? मील के पास. नाउ व्हाट इज दैट? प्रोडक्ट मिक्स. Company is using smart techniques to attract the customer, increase the sales so that they can get more profitability. So product mix decision is that where you choose a combination, a selection of product or service where you can attract more customers, increase your sales and improve your overall profitability. Okay, clear? Fine. So we'll stop over here. Some parts are remaining that will continue in the next session. So any doubts, any questions till now, anyone? Next session, we have budgeting, some topics of standard costing, and the remaining other topics. No such important question type you can say. Whatever we have discussed, you can go through all. Fine. Yes. Anything? PV ratio formula. Okay. PV ratio formula is contribution divided by sales into 100. Who wanted this? Acharya. It is contribution divided by sales into 100. लिख लीजिए आप. Any more doubts? Anyone? MCQs will be in the next unit. Okay, I'll repeat. See, I'll post it in the chat box if you all want. Contribution divided by sales into 100. ठीक है, मैंने chat box में डाल दिया, आप लोग देख लीजिए. PV ratio. Sorry, 1 minute. It went to only Sachin. 1 minute. I'll make it everyone. 1 minute. Hold करिए. Just hold on. Okay. Got everyone? Avdesh, that you need to check with your support team. I don't have any idea about this. PV ratio is P stands for profit, V stands for volume. Profit volume ratio. Next session, we are also going to do with some MCQs, multiple choice question. Okay. Clear, everybody? Any more doubts? Yes, everything is done, Muskan. रेवेन्यू मतलब क्या होता है रेहान? रेवेन्यू मतलब इनकम. तो आप इनकम जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा. सो रेवेन्यू सेंटर वो देखेगा कि मैं इनकम कैसे लाऊं कंपनी के लिए. yes that's enough, Rajesh. It's more than enough. Rehan, clear what is revenue now? Anybody else? Okay, thank you, Rehan.
Okay, product mix का example I gave you all. McDonald's. Where you can combine 3, 4 items and then the company offers you at an attractive rate. This that is what product mix. Yes. Anything else? Thank you, Rupesh. Okay. So thank you, students, for attending today's session. We'll meet in the next session. Thank you. Have a great day. Take care.